हेलो एवरीवन, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी। जैसे अभी प्रीलिम्स का स्टार्टिंग होने का समय आ गया है, सो आई एम गोइंग टू कम आउट विद अ सीरीज ऑफ एमसीक्यूज फॉर द प्रीलिम्स प्रिपरेशन. So this topic is what we call the MCQs for prelims 2026, and we are going to discuss different topics of economics for your upcoming exam preparation. So now if you look at the new current affair, the government has announced that they are going to have a new base year for national income from 2026. Okay, so the upcoming estimates of national income शायद हमें क्या होगा, हमको ये नया बेस ईयर में आएगा, तो ये बेस ईयर होगा 2026, इसमें से हमको स्टार्ट होगा. सो व्हाट इज द न्यू बेस ईयर प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट? सो इफ यू लुक एट ईयर, गवर्नमेंट ने क्या बोला है, दे आर गोइंग टू चेंज द बेस ईयर फॉर नेशनल इनकम कॉम्पिटिशन एंड द बेस ईयर विल गोइंग टू बी प्रपोज्ड बेस ईयर इज 2022-23. सो ये जो नया बेस ईयर है, इसमें हमारा जीडीपी का एस्टिमेट होने वाला है. So if you look at the exam point of view preparation, there are three things to keep in mind. Number one क्या है, the proposed base year for GDP, that is the national income estimate होगा 2022-23, and also the proposed base year for IIP, that is the index of industrial production, इसका भी base year होगा 2022-23. And the same time they are also proposing consumer price index, that is the CPI base year is also proposed to be 2024. Okay, so these are the proposals by the government. So from current affair point of view, we can think of this for exam preparation. So there are three things that are to be kept in mind. Number one है GDP, number two है index of industrial production, and number three CPI, that is the consumer price index. Okay, so now ये जो कमिटी है जिसका गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था बेस ईयर को चेंज करने के रिकमेंडेशन के लिए, इट कमिटी वाज अ 26 मेंबर एडवाइजरी कमिटी. उसका जो चेयरमैन थे उनका नाम है विश्वनाथ गोलदार. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हमें यह भी देखना पड़ेगा इस कमिटी का चेयरमैन कौन थे, राइट. कभी कभी ये कमिटी का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आएगा. नाउ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन यू, like for example you look at this MCQ, which of the following statements is are correct? National income estimates are published by NSO. The new base year for national income estimates is 2022-23. Vishwanath Goldar committee was set up to recommend the new base year. So which are the options are correct, right? So like this question you might get for the current affair point of view. So the answer for this, all these statements are correct because national income is published by the NSO, National Statistical Office, and the new base year as I told you 2022-23 होगा नया बेस ईयर. एंड विश्वनाथ गोलदार कमिटी उन्हों को गवर्नमेंट ने सेटअप किया था टू रिवाइज द बेस ईयर. ओके, सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ देम. ठीक है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1, 2 and 3. Now related to this, I am giving you another question. The first attempt to estimate national income in India was made by which of the following? Dadabhai Naoroji, V.K.R.V. Rao, P.C. Mahalanobis या गाडगिल. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? This is Dadabhai Naoroji. He is the one who made the first attempt to estimate national income. Another question also, what is the meaning of actually national income? When you say India ka national income, which of the estimates is actually considered to be the national income of a country, right? एक क्वेश्चन भी आपको आ सकता है. So if you look at the options here, we have the net domestic product at market price, या net domestic product at factor cost, right? या we have a net national income at market price, या net national income at फैक्टर कॉस्ट. अभी देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. इंडिया में अभी हम लोग जो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं ऑफिशियली, इट इज एस्टिमेटेड एट मार्केट प्राइस. ओके, सो जनरली जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, फिर जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम को ऐड करते हैं, वो जीएनआई बन जाता है. फिर उस जीएनआई से हम लोग क्या करते हैं, वी माइनस या सब्ट्रैक्ट द डेप्रिसिएशन. तो उसको करने के बाद जो मिलता है, इट इज कॉल्ड नेट नेशनल इनकम.
So end of the day, the final national income is the net national income at market price. So what will be the final answer for this question? The answer will be C, net national income at market price. So for the upcoming prelims exam, I am going to continue this series of MCQs. So those of you who are preparing for the prelims examination, you can follow the series. I will give you every video multiple choice questions for your upcoming prelims exam, so that it will be easy and also your preparation will be on track. Okay, so you keep following our videos, and if you have any further query, you can contact us at 8638391721. Okay, for any further query, you can contact on this number, and keep watching our video for more and more MCQ preparation for the upcoming prelims exam. Okay, thank you.